All right, so very good evening, everyone. Technically, today's lecture is the first of the introduction. Basically, we are basically starting a new journey, right? This is basically about the UGC NET paper one, right? And this image in the background, what you see on the slide is just for the motivation, right? This is our starting point, and we see the mountains. We are heading towards that, right? As we move along, as we complete the different parts of the course, will ultimately reach to that mountains. Okay. So on that note, let me just quickly show you the first slide. We today will live in the world of artificial intelligence. Okay. So I just asked of the computer if there is a student who is preparing for UGC NET in 2024 environmental sciences, can you show an image how it would be? So what you see on the left hand side is the image which came out. That is what, the all the internet data, whatever is there, the AI quickly went into that and then just created this journey, right? So on the same timeline, what you see over here is what our course is designed, right? This course, UGC NET paper one, right? I'll talk about all the aspects. Today's lecture is primarily an introduction of how the things will be in the coming days, right? It's just an overview and starting of this journey. So just remember this image on the left hand side, right? When you take each of the steps, we have all the technology, science around, and also there is space, so you can imagine different things. And ultimately, as you rise, what you see on the top, when the guy reaches the top, there is sunshine, right? And that is what is on the right hand side, right? The moment you qualify, the moment you get come with flying colors in the examination, this is where everyone ends up, right? The merit list, the image which is on the right hand side. So let's begin this journey together and make the most of every step as we move along. Okay, so as we see, there are different steps. We'll talk about each of them. Now, this presentation, the first introductory class. I have divided into three sections. Pehla section hai, of course, a lot of you would be knowing it, but the primary objective is as motivated by Gaurav sir, that we need to start from the scratch, right? To give the best foundation and get the job done. So this presentation will basically have three aspects. We'll just talk about understanding paper one through different lenses like data ka lens, what is the kind of syllabus, what all is expected. Second, what will the teaching plan of this course? कैसे हम अगले 3 महीने की जर्नी को कंप्लीट करेंगे, राइट? दैट इज द सेकेंड पार्ट. एंड फाइनली, जिस मोटो पे हम काम करेंगे, I will just show you a small demonstration of that, right? So we'll have a live practice session. Well, I'll ask all of you to put the answers in the chat box, and we'll ultimately first learn the concept and then apply it, right? So that's the journey which will unfold, right? Next few minutes today. So the first section, that is understanding UGC NET paper one, right? You're already getting a amazing training in the other aspects, right? Paper two and the other technical details of environmental sciences. But if you're already knowing, you all have experience, but still just try to have a quick recap of what this paper one demands from each of the candidates. Okay. Now to understand that, there are two aspects, right? Remember that. Pehla, exam ka structure, right? If we go to UGC NET ke website pe, so there is a syllabus, right? One can download. That's the starting point. कुछ पुराने question papers ही मिल जाते हैं, right? Not up to date. I had to look into the internet to look at in the latest papers. Again, to bring the insights. जो insights मैं आपको अभी दिखाऊंगा अगले 2-4 slides में. तो पहला इंसाइट आता है यूजीसी नेट के वेबसाइट से, जहां इट टॉक्स अबाउट द structure of the examination, right? That how many questions are there. It's a national level test. It's a computer based test. It's a defined syllabus, right? एक syllabus है जो कि defined है. और एक मुझे बड़ा interesting aspect लगा कि there are 10 different topics
और ऐसा लिख रखा है कि हर टॉपिक से 5 सवाल आएगा, राइट? दिस समथिंग विच इज रिटन ऑन द वेबसाइट, नॉट सेड बाय मी, इट्स ऑन द वेबसाइट, यू कैन गो बैक एंड चेक, राइट? सबसे पहले दैट्स हाउ वी नीड टू स्टार्ट, राइट? उस एग्जाम के बारे में पूरे डिटेल्स को समझना। सेकेंड, एज आई टोल्ड यू, एग्जाम स्ट्रक्चर ऑनलाइन है। दिस द स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर, दैट इज I will try to give you some historical insight ki jo, looking at the data as in, I mean, we look at what are the different number of questions from different parts of the the syllabus, and what is the difficulty level. Difficulty level as in कि क्या आप क्विकली उसको आंसर कर सकते हैं विद इन अ सेकेंड, या कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्या कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है? सो बेस्ड ऑन दैट आई विल जस्ट गिव यू एन insight on that as well. So first part first, that is, we look at the syllabus. These are the 10 topics which we will be covering together, right? In the next 3 months, when we meet, on weekdays, weekends, to kind of cover each of these topics. मैंने हर टॉपिक के साथ ना एक इमेज लगा रखा है, राइट? एंड दैट इमेज इज अ वेरी मच सिग्निफिकेंस, राइट? कि कभी भी कोई भी काम करने के पहले, राइट, दैट्स व्हाट आवर ट्रेनिंग इज इन एएसएस साइंस फाउंडेशन, दैट वी वांट टू नो व्हाई वी आर डूइंग इट, राइट? उस समय में हम कुछ और कर सकते हैं, समथिंग, I don't know, we can hang out with our friends or do something else. But if we are studying a specific topic, what is the exam demanding from us? The first topic is teaching aptitude. Can everybody see the image there? Please in the chat box. सबको images दिखाई दे रहे हैं जो मैंने पुट किया हुआ है? Just tell yes or no in the chat box. Can you look at the images? Am I audible? Okay, good. Thanks, Daljit. We can we can look into it. Right, so let's focus on each of the images. Yeah, that's good. Keep answering in the chat box. It should be a one-on-one, session, not just I am speaking and it's already, we're in the evening time. So it's best that you keep responding. And if there are any doubts, just stop me. So, आप देखो हर इमेज के साथ आप ध्यान दो कि what is this examination demanding from you? Teaching aptitude. Teaching aptitude. Yeah, this is the first class, Meenakshi. Yeah, this is the introductory session actually. We'll be talking about from today we build on, for the 3 months of our journey. I hope you looked at the first slide. We are at the starting point. Is that okay? I hope that's okay. Let's move on. So teaching aptitude, what you see is there's a lady teacher who is surrounded by different students. So the very purpose of this part in the syllabus, always remember that जब भी आप एग्जाम में आज से 2 months के बाद जब आप दोबारा एग्जाम दे रहे होंगे 2.5 months, you should always remember these images. Whenever such a question comes in teaching aptitude, this is what is being demanded, that you are able to cater tomorrow as a lecturer. If any one of you joins as a lecturer, you're able to cater to the aptitude for getting the teaching job done. That's why this image, right? Again, all these are computer generated images with a lot of research, right? They have scanned thousands of images. What is the meaning of UGC NET paper 1? And then these images have been given. Second, research aptitude. यहाँ पे क्या है? It's like a pipeline. बहुत सारे लोग research में लगे हुए हैं. So research aptitude का मतलब है that you have to be trained in such a way to answer such questions so that tomorrow you get fit in this world of research, right? Where you are part of the experiment or the different aspects of performing research, right? That's the research aptitude. Third, if you look at the third image, that's a comprehension, right? Comprehension is basically for reading up, but primarily the very purpose it's in the course is so that you can read up, right? You're able to understand research topics, in an easy and simplified way. That's why you should be in a position to understand. That's why in the exam, you'll be given a comprehension, you'll have to answer certain questions. The very purpose of that comprehension is that you are able to comprehend information and data, right? So you perform research.
Next is communication. Next is communication. Again, when you look at communication, what you see is a bunch of students and there's a researcher who is sitting in between, right? So again, in research, communication, in research and teaching, communication is a very important aspect. So all your questions, all the syllabus is defined in such a way that to make you a good researcher who can, perform communication, etc. for the purpose. Mathematical reasoning and aptitude, that's straightforward. That is, one is able to do the calculations, right? Tomorrow you might be doing some experiment, gathering the data. So you should be in a position to perform certain aptitude tasks related to data, right? That's why the next two images, logical reasoning, data interpretation, all that comes into this aspect, right? You have to use the logic, right? So which is correct, factually correct, and then apply that to your research problem or your teaching problem, right? Which is at your hand. ICT, that's information and communication technology, also popularly called as IT, right? Information technology, that's basically the computer world. As of now, we are using that, right? You all are sitting either on your laptop or on your tablet or your mobile phone. So that's communication technology, information communication tech. Just imagine how sitting away from you for a few hundreds kilometers, hundreds or thousands of kilometers, are able to, through this platform of Zoom, I'm able to communicate with you, right? So what are the different tools and techniques in the information technology? That is the next aspect. People development and environment. I don't need to, teach students about environment who are already experts in that, right? So you'd be knowing, I mean, this part is already being taken care in part in the paper 2, right? And the paper 3. And finally, higher education system, right? Because all these research, technical research, advanced teaching is somewhat ये आपके देश के उच्चतम, study के लिए, higher education place to make your country grow, to make the world a better place, right? So what are the higher education systems in place? You need to have the nitty-gritty and the details of the system as well. So these are the 10 aspects on all of which we'll be spending a lot of time in the next 3 months. Okay. On a day to, I mean, both on weekdays and weekends. Now, some statistics, as I talked about, that कुछ statistics का बात कर लेते हैं, right? Some statistics मतलब कि data क्या कहता है, right? This image, you can see the multiple people standing there looking at different graphs, right? On similar way, हमने, Gaurav sir ने actually वो data दिया, so we kind of looked at the last 5-6 years of data, and then he constructed something called as a heat map. ये लेफ्ट हैंड साइड में जो आप देख रहे हैं, what you see on the left hand side is the heat map, right? This one. ये ग्राफ देख रहे हैं ना आप नीचे, दिस इज अ हीट मैप. हीट मैप क्या होता है? हीट मैप में आप देखो यहाँ पे, दिस इज अ लेजेंड, राइट? बेसिकली लेजेंड का कलर चेंज हो रहा है. ब्लू पे जीरो है, जैसे जैसे रेड हो रहा है द नंबर इज इंक्रीजिंग, राइट? So what is happening over here? यहाँ पे लेफ्ट हैंड, हाउ डू यू लुक एट द ग्राफ? यहाँ पे आप देखो, these are different टॉपिक्स, जो मैंने आपको 10 टॉपिक्स बताया था. तो ये सारे टॉपिक्स हैं, और जिस टॉपिक से जितना ज्यादा सवाल आया है वो उतना ज्यादा डार्क कलर का है. यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड से करीब 8 से 9 सवाल गिरे हैं. अगर हम एवरेज कर दे तो मे बी हर साल, आई एम नॉट श्योर, यूजीसी के वेबसाइट पे ऐसा लिखा है कि 5 सवाल आता है, बट लुकिंग एट द एक्चुअल डेटा इट इज नॉट ट्रू. Okay, we see there is a variability. Certain topics pop up with more number of questions, right? And again, उसके बाद मैंने क्या किया, बेस्ड ऑन द टाइम टेकन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम, मैंने उस डेटा को फर्दर डिवाइड कर दिया कि क्या वो इजी था, क्या वो मॉडरेट था, क्या वो डिफिकल्ट था, या इजी टू मॉडरेट था, राइट? सो दैट्स बेसिकली हीट मैप, जिसमें आप दोनों इंफॉर्मेशन को एक साथ देख पाते हैं. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इन द चैट बॉक्स क्विकली, क्या बात क्लियर है? हीट मैप कैसे, क्या करता है, हाउ डू वी put up the information? Is that clear to everyone? Okay, very good.
So that's how we can see there are certain topics which again, और यहाँ पे आप देखो easy level में DI का डेटा मुझे easy नहीं दिखा. That is, you have to give some practice. Moderate level पे, right? You have to practice, only then you can make a perfect sense out of it. We'll look at a concept as well today from a practical aspect. ऐसे ही हम हर concept को देखेंगे. Similarly, right hand side में अगर आप देखो तो this is a pie chart कि किस आप देख सकते हो कि more or less 80%, 80 to 90% आपका सवाल इजी टू मॉडरेट लेवल का रहता है, यानी कि 50 मार्क्स में आप 90% बड़े आराम से स्कोर कर सकते हैं. कितना होगा 90% 50 मार्क्स का? एवरीवन इन द चैट बॉक्स जल्दी से बताएं, व्हाट इज 90% ऑफ 50 मार्क्स? 45. That's the point. So that is where I'm aiming in this course. 45 number आपका is something which is very much, possible. Okay. All right. If that is kind of done, let's move on. What will the teaching plan of this course? इस कोर्स में हम कैसे काम करेंगे? जो मैंने आपको बताया, हमारा जो कोर्स है पेपर 1 का, दैट इज ऑफ दो यॉनर है बेसिकली, राइट? यॉनर आप समझते हैं, राइट? कैटेगरीज. देयर आर 2 डिफरेंट कैटेगरीज. एक है जहां पे आपको थोड़ा पेन पेंसिल चलाना पड़ेगा, राइट? यू हैव टू डू सम कैलकुलेशन, यू विल हैव टू डू सम डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, get some calculation and get to a answer, right? Whereas the second topic is more of a theoretical, right? Which is, I would say, it has a scope where you have to read up, mug up, understand, learn certain things, and then practice previous year questions. Or we'll forecast also what are the questions based on last few years ke analysis pe, topic ke, syllabus ke, and then you have to be on, you have to get those theoretical answers right, right? That's the second part. So इस कोर्स में हम दोनों चीजों पे टैंडम में काम करेंगे, राइट? पहला काम जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है, राइट? जैसे हमारा जो फर्स्ट लेक्चर होगा, आई मीन टुडे इज द फर्स्ट लेक्चर, बट जब मैं पहला टॉपिक आपके साथ स्टार्ट करूंगा, आई विल बी वर्किंग विद आईसीटी, दैट्स इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के ऊपर. तो हम theoretical topics को at A.S.S Academy we have always pushed the honor, right? We always look to give you the best kind of way to grasp the topic, and again the aim is 45 plus. We are here for 45 plus, right? Nothing less. So if you have to have such a objective of 45 plus, तो आपको एक स्ट्रैटेजी के तहत काम करना पड़ेगा, so that you don't miss out on any topic, and also you cover the you cover horizontally all the topics, and also you look vertically as well. ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कैन करके आप horizontally सारे टॉपिक्स कर गए, बट आपको उसमें भी हर एक टॉपिक को कवर करना है डेप्थ में, जो भी रिक्वायरमेंट है, राइट? पेपर 1 का. सो हम माइंड मैप अप्रोच के ऊपर काम करेंगे. एनीबॉडी हु हैज हर्ड अबाउट व्हाट इज माइंड मैप? या कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज माइंड मैप? एनीवन इन द चैट बॉक्स क्विकली, एनीबॉडी नोज व्हाट इज माइंड मैप? जस्ट टेक एन अटेम्प्ट. इट्स ओके इफ वी आर रॉन्ग. नाम से क्या लगता है माइंड मैप क्या हो सकता है? एनीवन? I give 30 more seconds and I move on. Making images in mind, excellent. Blueprint, very good. What else? Both of you are absolutely right. Chalo, no worries. Well done. देखो नाम में, okay, we have one more answer, excellent. From the main topic to depth. Strategy in our mind, excellent. All of you have very good answers, very good thoughts on this. Mind map को आप इस तरीके से समझो, हमारा जो ब्रेन होता है ना, our brain, it is basically, जो परमात्मा ने डिजाइन किया, has designed on the basis of something called as neurons, right? At a fundamental level. और न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं,
राइट। एक इंफॉर्मेशन दूसरे इंफॉर्मेशन से जुड़ा रहता है। जैसे मान लो कि आप आप अपने घर से कॉलेज जाते होंगे या ऑफिस जाते होंगे, सो आप एक बार में आपके माइंड में कैसे पता होगा कि यार यहाँ से बाहर निकलूंगा, अपने घर से लेफ्ट लूंगा, फिर राइट लूंगा, फिर यहाँ जाऊंगा, देन आई काइंड ऑफ रीच एट दिस पॉइंट। ईच ऑफ दोस एस्पेक्ट्स आप याद रखते हो बीच में। कहीं भी अगर टूटा तो साहब आप डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाओगे। राइट। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। तो इसी कॉन्सेप्ट को माइंड मैप बोलते हैं। तो हमने सिलेबस को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो भी इस टॉपिक से, नॉट ओनली फॉर दिस टॉपिक, फॉर ऑल द यूनिट्स, me and Gaurav sir, we have designed the course in such a way that we will be building up in the mind map approach। मतलब कि जो कॉमन टॉपिक्स है, कॉमन टॉपिक्स एज इन एक जोन का, एक जॉनर का टॉपिक है, दे हैव बीन ग्रुप्ड इन अ पर्टिकुलर कलर कोड। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कलर स्केल है, यहाँ पे एक अलग कलर स्केल है, यहाँ पे एक अलग कलर स्केल है। राइट। और ये आपका सेंटर में टॉपिक है आईसीटी का। राइट। सो दैट इज हाउ वी विल कवर ईच एंड एवरी टॉपिक। बट बहुत सारे टॉपिक आपस में लिंक्ड है। राइट। सो विल कवर द इंफॉर्मेशन सच अ वे कि आपका सारा न्यूरॉन्स इंटैक्ट रहे, ताकि उस दिन एग्जाम के दिन ऑप्टिमम परफॉर्मेंस मिले आईसीटी का। राइट। सो दैट्स हाउ दिस कोर्स इज बीन डिजाइन। दैट्स द क्यू। राइट। नयापन क्या है, दैट्स द बेस्ट पार्ट। सो दैट्स व्हाई आई मोटिवेट ऑल ऑफ यू टू प्लीज टेक एक्टिव पार्ट इन दिस। एंड अगर आपने अगेन यू हैव सम कॉन्सेप्ट्स, आप उन कॉन्सेप्ट्स को आई वुड से डिलीट कर दीजिएगा। राइट। टेक इट एज अ फ्रेश कोर्स। राइट। इट्स गोना हेल्प यू वेरी इन अ वेरी लॉन्ग वे। सो माइंड मैप अप्रोच के साथ हमने सारे मॉड्यूल्स को डेवलप किया है। राइट। और हम रोज जो डिस्कस करेंगे, वी आर यूजिंग एआई, अ लॉट ऑफ एआई टूल्स इन आवर स्टडी अप्रोच। राइट। सो यूजिंग ऑल दैट एंड द माइंड मैप अप्रोच, चीजों को ओनली मेड इन अ वेरी easy format for you to understand and store the information। राइट। जो चीज यहाँ से लिंक्ड है, एज इन ईमेल इंटरनेट से लिंक्ड है, तो उसके साथ ही हम पढ़ेंगे, उसके साथ ही उसके सवाल करेंगे। और जैसे ही आप सवाल कर लोगे, आपको हैंडआउट्स मिलेंगे जिसके आप विच यू हैव टू कैरी, एंड आप अपने एग्जाम के टाइम पे यू कैन रिविजिट देम। और फाइनली आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देना होगा द मोमेंट वी फिनिश ऑफ अ टॉपिक, सो दैट freezes it and then you have to revise it। right। जैसे ही एग्जाम आ जाएगा, ऑल द सक्सेस ऑफ 45 प्लस विल डिपेंड ऑन आप रिवाइज कितने अच्छे से कर पाते हैं चीजों को। राइट। सो कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड। आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हम हर एक, मैंने बस आज एक यूनिट का यहाँ पे रखा है माइंड मैप। इस तरीके से हमने सारे यूनिट्स का डेवलप किया, और सारा मटेरियल इस कोर्स का इसी के अराउंड ऑसिलेट करेगा। ओके। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स इट। this is an image again, thanks to AI. It's an AI generated image. I just imagine how would be a human being look like who's preparing for UGC NET 2024. So this is what the computer thinks, looking into all the global data, right? So what I'm happy is the computing world thinks it's a female, right? So that's women empowerment in our country. I hope that's happening at a very rapid pace. Even the computers are understanding it, right? I hope everyone appreciates that point. So ये हमारा upward trajectory का journey है. Sorry, this is our journey, right? What you see, these are different topics. आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने दोनों टाइप के टॉपिक्स को रखा हुआ है। मतलब मैं साथ साथ चलूंगा। इट्स नॉट दैट आई विल बी मोनोटोनस कि मैं सिर्फ आपको थ्योरेटिकल पढ़ा रहा हूँ। कुछ चीजें मैं टेक्निकल करूंगा, तो कुछ साथ ही साथ आई विल बी वर्किंग ऑन द थ्योरेटिकल स्टफ। एक थ्योरेटिकल खत्म हुआ तो ऑटोमेटिकली दूसरा टेक्निकल टॉपिक, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, सिल्वॉलिज्म, ऑल दैट विल कम इनटू प्ले। देन उसके बाद कुछ लास्ट में ऑफ कोर्स विल बी सम थ्योरेटिकल टॉपिक्स, लाइक जो दो तीन चैप्टर्स हैं, लाइक कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन सेक्टर। So that will be a lot of technical discussions. Again, all that will be very interactive. आपसे सवाल जवाब होगा. It will be fun to learn, right? But our trajectory will be this, right? So just everyone, I just want all of you, wherever you are, just take a note somewhere. Circle karo 45 plus, right? That is what you have to hit, right? Correct questions in your UGC NET paper 1 whenever you are sitting next. Okay. And I wish that happens with all of us. We'll be taking up the examination in the days to come.
ओके, सो दीज आर द डिफरेंट टॉपिक्स, और मैंने एक रफ आइडिया दिया है, वीकली बेसिस पे हम ऐसे ही चलेंगे, राइट? यू कैन जस्ट इमेजिन लाइक डीआई और आईसीटी इज अ 2 वीक्स का थिंग, राइट? 2 वीक में हम इन सारे इस टॉपिक को खत्म कर लेंगे। सो यू कैन जस्ट ब्रेक अपॉन ये सारे टॉपिक्स, अप्रोक्सीमेटली 2 वीक्स के हैं, राइट? एंड वील काइंड ऑफ बाय द एंड ऑफ 3 months we'll be able to cover the entire syllabus. Okay, I hope that is everyone is okay with that. All right, और साथ ही साथ this is your standard textbook. I hope everybody has that. I will be also extensively using this book for for covering some concepts or other things. इसका latest edition I think is 8E, right? For the image what is over here, that's 8E is the latest edition. Please have that. Along with that, इस course के दौरान आपको standard handouts मिलेंगे Google Classroom पे. You can take a, you can just download them and read through it. जिसमें basically जो भी पढ़ाई होगी उससे related information होगा. What is, it's like a crisp note which so that you are independent. आप class के time just focus on the class, और साथ में आप पेन चलाइए if there is a mathematical operation or something like that. और नोट्स की आप बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि वो स्टैंडर्ड हैंडआउट्स के फॉर्म में गूगल क्लासरूम पे अपलोडेड आपको मिलेगा। ओके, उसके सिवा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस टेस्ट। मैंने आपको बताया आई एम अ डेटा गाइड, राइट? सो आई विल पुट ऑल ऑफ योर इमेजेस ऑफ डेटा एनालिसिस एज वी मूव अलोंग, कि किसने कितना स्कोर किया, किसका क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। और अगेन नथिंग टू वरी अबाउट, ये एग्जाम के पहले कर देना अच्छा होगा। सो बाय एनी मीन्स यू विल हैव टू फॉर श्योर टेक अप द प्रैक्टिस टेस्ट and record your scores, which will be used, right? That will be directly used by us, the designer, or I mean the mentors of the course, by Gaurav sir and me, so that we can plan the course. किसी चीज में ज्यादा डीप में जाना है, ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, so that's why we'll have to take these tests by heart. Okay, I hope everybody understands that. All right, so these were the instructions, and we are all get to go for today's session. I'll be just demonstrating what is, मैं just पर्दा उठा रहा हूं आज कि क्या होने वाला है आने वाले दिनों में, किस मॉडल पे हम काम करेंगे। Okay, is everybody ready for that? Shall we begin? Yes or no? Is everyone ready? Let's move on for the first concept in the course. Okay, excellent. Guys, please अपने chat box को चलाए रखें. Keep that active. So let's have a first session. Please, everybody, focus. Okay, just remove all the noise. Focus on the concept. So the first concept, again, on the right hand side is the image. इस कॉन्सेप्ट को हम समझने वाले हैं अभी। आज समझ लिया आपने तो आने वाले दशकों तक आपको याद रहेगा। ओके, द कॉन्सेप्ट इज बेसिकली स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, स्पेसिफिक ट्रेन्स के बारे में, राइट? ये एक पर्टिकुलर यूनर है प्रॉब्लम का, बट जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट इज स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ओके, इस कॉन्सेप्ट में अगेन ये इमेज है, अगर मैं एआई को बोलूं तो दिस इज व्हाट द इमेज आई गेट। दिस इज मे बी समवेयर इन यूरोप, बट अगेन जोक्स अपार्ट, इस कॉन्सेप्ट में 3 मूल चीजें हैं विच यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू रिमेंबर बाय हार्ट। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज स्पीड। स्पीड क्या होता है? ओके, second, that is basically we'll talk about the speed, distance, time relationship. That's number one. Second concept जो आपको बहुत, which you have to understand and remember by heart, is you have to be in a position to convert the units, right? And third and foremost is the concept of distance, right? So these are the 3 main concepts, right? This is just the overview slide. इसमें कोई information नहीं है, nothing to worry, but just understand, मेरा इस स्लाइड का की मैसेज है कि anyone who is an expert in speed, time and distance should be knowing कि speed क्या होता है, should be knowing unit conversions, and should be having a very clear cut concept of distance. Distance, total distance covered का concept. Okay, एक एक के ऊपर let's talk about.
सबसे पहले स्पीड, व्हाट इज स्पीड, है ना। स्पीड अगेन दिस इज नॉट अ फिजिक्स लेक्चर, दिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एप्टीट्यूड, बट आपको ये समझना है कि कोई भी चीज कितनी तेज है, हाउ फास्ट एनी ऑब्जेक्ट इज, वो समय के साथ कितना तेज चलता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्पीड. सो इट्स बेसिकली डिस्टेंस, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. सो स्पीड, अगर मुझे स्पीड को डिफाइन करना है, स्पीड इज नथिंग, एस इज इक्वल टू डिस्टेंस. अगर मैं डिस्टेंस को डी से डिनोट करूं और पर यूनिट यानी कि पर यूनिट टाइम, सो स्पीड इज नथिंग, it is distance by time. अगर anybody travels x amount of distance in a particular time, so his speed is going to be x by t, right? That is a simple concept of speed. Again, because from the aptitude perspective, this is a shortcut to remember the formula, right? As I told you, मेरे पिछले स्लाइड में डिस्टेंस स्पीड टाइम थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ था, बट एक्चुअल में दिस इज द राइट कॉन्सेप्ट, राइट? That speed is equal to distance per unit time, and you need to always remember this triangle, right? Focus on this triangle. इस ट्रायंगल में अगर दो चीज है तो तीसरी चीज ऑटोमेटिकली निकल जाएगी. सो दैट्स हाउ यू रिमेंबर इट. यू ड्रॉ अ ट्रायंगल, राइट? यू ड्रॉ अ ट्रायंगल, उसमें बीच से मैंने लाइन पुल किया, और यहाँ पे आई हैव रिटन डी, यहाँ पे आई हैव रिटन टी, और यहाँ पे आई हैव रिटन एस, राइट? नाउ इन दिस, द मोमेंट if I have to calculate, if I have to, I can calculate the third. मान लो इसको मैंने कलर कर दिया, राइट? मुझे स्पीड चाहिए, राइट? सो क्या फॉर्मूला है? you see there is a line, right? So d by t. So that's how you basically replace it with division. So distance by time is speed. अगर मुझे, if I want time, supposedly the third thing in the triangle, so in that case, the moment there is a line, always remember line denotes a division, right? So time का window यहाँ पे color हो गया, that is basically distance upon speed. That's the second concept. And third and final is, अगर मुझे distance के बारे में जानना है, is the top one, तो ये दोनों आमने सामने है, so here is a straight line, so I just replace it with a multiplication. So अगर मुझे distance चाहिए होगा, the formula is speed into time. In easy and simple terms, आप ये भी समझ सकते हो कि अगर if I have written speed is equal to distance upon time, so I can just move it this way. So my distance becomes speed into time. The same thing is being elucidated with these three triangles, right? Is this concept clear to everyone? Distance, speed और time का क्या सबको clear है? Please tell me yes or no. Very good. So if the concept is clear, that was our first checklist, right? In the previous slide, if I just go back, right? Again, the formula over here is the distance by time, but there are three concepts, speed. So we are done with the speed. Okay, let's move to the next concept, that is units of speed. Okay, जो मैंने आपको बताया, डिस्टेंस आर यूनिट्स ऑफ लेंथ. डिस्टेंस क्या बताता है? कोई भी ऑब्जेक्ट ने कितनी दूरी तय की, वो डिस्टेंस या तो मेट्रिक यूनिट्स में हो सकता है, यानी कि या तो वो किलोमीटर में हो सकता है या मीटर में हो सकता है, राइट? साथ साथ दूसरा चीज जो है डिस्टेंस के सिवा, वो है टाइम. सो टाइम को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? सेकेंड्स में, मिनट्स में, या आवर्स में. सो अगर if I say that if I say that distance is equal to, sorry, not distance, let me just clear it. If I say speed is equal to distance upon time, if your distance units is in kilometer, and if I say, if I put the time in hour, can we tell me speed का क्या unit हो जाएगा? What will be the unit of speed? Right. In the chat box quickly.
kilometer per hour, right? So there is one conversion, right, which you have to remember. इसका समझ नहीं आता, मम्मा बोलती है, मामा बोलती है, म्याऊं म्याऊं बोलती है. Excuse me, I'll have to just mute. Okay. All right. So that's what it is in kilometer per hour. अच्छा, same question अगर मान लो, if I say that the distance is in meter and time is in seconds, तो unit क्या होगा? If one is say kilometer per hour, if my distance is in meter and time is in second, what is the unit of speed in this case? In the chat box quickly. अगर डिस्टेंस किलोमीटर में था, टाइम आवर में था, द यूनिट ऑफ स्पीड वाज किलोमीटर पर आवर. इफ द डिस्टेंस वाज supposedly in meter and the time is in seconds, very good, then the unit is in meters per second, right? So friends, just remember this as a concept. That either your distance will be in kilometer per hour or your distance should be in meters per second. एंड दिस अ वेरी सिंपल कन्वर्जन. अगर मान लो कि अगर आपकी स्पीड दी हुई है किलोमीटर पर आवर में and you have to convert it to meters per second. So 1 kilometer corresponds to 1,000 meter and 1 hour corresponds to a 3,600 seconds. So अगर आपको as a shortcut, just remember, if you have to go from kilometer per hour to meters per second, so your factor is basically 5/18, right? And if you have to go from meters per second to kilometer per hour, then you just reverse this and your factor is 18/5. Just remember it. अगर आपको x kilometer per hour को, if you have to change it to x meters per second, you need to multiply it with a factor of 5/18. वो 5/18 आया यहाँ से 1,000/3,600. And if you have to go, say, from meters per second to kilometer per hour, then you need to just reverse it and multiply by 18/5, right? So if everybody understands that, is that clear to everyone? Unit conversion कर लेंगे kilometer per hour to meter per second or vice versa. Can everyone do it? Yes or no? Can you convert? In the chat box quickly. Very good. अगर ये दोनों concepts clear है, then we move to the last and the final, that is the concept of distance, right? Let's finish off the concept of distance, which is the most important concept. अब देखो, जब कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस की बात होगी स्पेसिफिकली ट्रेन के प्रॉब्लम में, whenever speed, distance and time will be involved, there are two genres of problem, right? या तो ऐसा होगा, सवाल में बोल देगा कि there is a train, right? There is a train which is crossing a tree or crossing a pole or crossing a man, right? और उसके बाद आपको बोलेगा वो either of the, it would give two things, यानी वो हमेशा याद रखना ट्रायंगल, राइट? स्पीड डिस्टेंस में हमेशा you always have one thing or the other, राइट? दो चीज आपको दिया रहेगा स्पीड डिस्टेंस टाइम से, और एक चीज कंप्यूट करने को बोलेगा आपसे. ओके, सो व्हाट विल हैपन टेक्निकली इज that you will be asked to calculate either of the parameter, right? Speed, distance or time, or it will be asked in the perspective. For example, you look at this problem, right? यहाँ पे क्या हो रहा है? I am drawing your eyes. Okay, यहाँ पे क्या हो रहा है? Here is a train. Okay, I hope everyone can see the train. ये train सबको visualize हो रहा है? You can look at the train. Yes or no? Train दिख रहा है ना? यहाँ पे there is a train. Good. So we see there is a train over here, and we see there is a tree, right? So this tree को ये train cross कर रहा है, right? So when, अब ऐसे केस है, बताओ कब मैं बोलूंगा कि ये train has crossed the tree? जब ये जो पूरा का पूरा ये जो पूरा का पूरा लेंथ है ट्रेन का, if say it is L, if this entire length, right,
has crossed the tree, right? अगर the moment I move from here to here, मतलब कि पूरे की पूरी ट्रेन ने this entire length of train has been crossed, right? So in this case, concept में हमेशा याद रखना, जो distance होगा that will be length of the train. On similar grounds, अगर मान लो अगर ये ट्रेन अगर किसी ब्रिज टनल या प्लेटफॉर्म पे पास कर रहा है, सो यू कैन सी हियर इज अ ब्रिज, राइट? इस ब्रिज का भी लेंथ एल है और ट्रेन का भी लेंथ एल है. इस केस में इफ आई से व्हेन विल द ट्रेन क्रॉस द ब्रिज, अब देखो यहाँ पे एक छोटू सा ट्रेन मैंने बॉगी बनाया है लास्ट. व्हाट इज हैपनिंग? वो ट्रेन क्रॉस कर चुकी है. अब की बार व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्टेंस? अब की बार द इफेक्टिव डिस्टेंस इज L plus L. That is 2L. Why? That is the length of train and also the length of the bridge, right? Whereas when there was a pole or a tree, the length involved was only the length of the train L. ये बात सबको समझ में आ रही है? Yes or no, everyone? Are you able to understand the two different concepts? एक बार ट्रेन प्लेटफॉर्म पे है, एक बार ट्रेन एक ट्री को क्रॉस कर रहा है. द लेंथ्स आर डिफरेंट. Yes or no? I need more answers. I have one answer that you have followed. Okay, Savita, I'll just repeat it. So there are two concepts. What is being shown over here? यहाँ पे आप देखो, there are two cases. One is जब भी ट्रेन और ऑब्जेक्ट का प्रॉब्लम आएगा एग्जाम में, there are two genres. या तो ट्रेन एक, train will be involved with a man or a tree or a pole, or the other will be train will be involved with a tunnel, platform or a bridge. Okay, so this is your train. Is train ka length L hai. Okay, and I'm saying that the train is crossing this tree. तो मैं when will I say that the train has crossed the tree? जब आपका जो ये लेंथ है, यानी कि फ्रॉम हियर टू हियर, दिस एंटायर लेंथ, जब वो ट्रेन इस पेड़ को क्रॉस कर जाएगा और सिचुएशन यहां से यहां पे चेंज हो जाएगी, राइट? ये सारा का सारा एल लेंथ अब ट्रेन के आगे है, राइट? इट हैज क्रॉस द एंटायर लेंथ. इस केस में द एंटायर डिस्टेंस इन्वॉल्व इज लेंथ ऑफ द ट्रेन, ओनली 1L. ओके, वेयर एज जब ये ट्रेन, व्हेन आई टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ ब्रिज, तो ब्रिज का स्टार्टिंग आपका यहाँ पे है, राइट? दिस इज योर स्टार्टिंग ऑफ द ब्रिज, दिस इज द एंड ऑफ योर ब्रिज. अब जब ये ट्रेन क्रॉस कर जाएगी पूरे ब्रिज को, तो ये लेंथ तो है ही, साथ साथ इट हैज टू कवर दिस एंटायर लेंथ, राइट? So the total distance in this case of a bridge problem or a tunnel problem is L plus L. Whereas in case of a length of a train is a single L. In case of a tree or a pole or a man. तो आने वाले दिनों में जब भी आप ऐसा सवाल देखेंगे, या ट्रेन इज क्रॉसिंग अ पोल और ट्रेन इज क्रॉसिंग अ मैन, तो आपको ये वाला यूनर याद रखना है, डिस्टेंस इन्वॉल्व इज एल. और दूसरे केस में जब ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को या एक टनल को या एक ब्रिज को क्रॉस करेगा, उस ब्रिज का भी लेंथ दिया होगा. उस केस में जो आपका स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम का फॉर्मूला है, यहाँ पे डिस्टेंस विल बी दिस टोटल लेंथ. इज दिस ओके with everyone? No, please tell me, Savita, is this concept clear now? The concept of the length, the concept of the distance, is it clear? Very good. याद रखना, बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे आपको. Have to just clear off the diagram. और अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, so we'll straight away apply this on a problem. So ये यूजीसी नेट 2023 का सवाल है जो अभी दिसंबर में हुआ, राइट? इस सवाल में क्या बोल रहा है? The problem is a train is moving at a speed of 63 किलोमीटर पर आवर. अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ा, उन सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज है इस सवाल में. ओके, सो दैट्स दी माइंड मैप अप्रोच. आपने जो जो कॉन्सेप्ट अभी सीखा उसको अप्लाई करना है स्ट्रेट अवे. सो हियर यू आर गिवन अ स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर. इट एंटर्स अ रेलवे स्टेशन. अगेन आई जस्ट ड्रॉ इट. ये मान लो ये मेरा ट्रेन है और ये मेरा प्लेटफॉर्म है, राइट?
दिस इज माय प्लेटफॉर्म, ये ट्रेन एंटर कर रही है, इट एंड क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म इन 20 सेकेंड्स, मतलब कि यहां से यहां वो पास कर गया। कितने टाइम में पास किया? इट पास इन 20 सेकेंड, यानी कि साहब जो ट्रेन है, ट्रेन ने 20 सेकेंड्स में पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म कवर कर लिया। अब जो लेंथ ऑफ द ट्रेन है वो तो 100 मीटर है, यानी कि इस ट्रेन का लेंथ उसने दे दिया 100 मीटर है। ओके, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म? याद रखना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। आई गिव यू 30 seconds to all of you to solve this question, then I'll solve it. I give you 30 seconds. सारे सवाल का सारे कॉन्सेप्ट्स का उपयोग है, यूनिट्स का कॉन्सेप्ट, स्पीड का कॉन्सेप्ट और डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। 200 थोड़ा जल्दबाजी में कर दिए सविता। इट सीम्स लाइक यू माइट बी राइट, आई एम नॉट श्योर, बट इतने जल्दी में नहीं करना है। जस्ट recalculate and try again. You might get the same answer, but please just try again. Nothing to rush. We are not catching this train. On a lighter note, ये ट्रेन तो जा चुकी है। This train has already passed. So take another attempt. Anybody else with the answer? कोई दुख नहीं, well tried, Savita. Well done. If there's anybody who wants to take an attempt on the answer, else we move to the solution. I give 10 more seconds. 250, excellent. All right, so let's move on. सवाल में क्या दिया हुआ है? ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है, दैट इज 100 मीटर्स। ओके, उसके सिवा स्पीड दिया रखा है 63 किलोमीटर पर आवर। इट सेज इट टेक्स 20 seconds to cross the platform. It is basically asking for the length of the platform. So the step one is, because कुछ चीजें मीटर में है, सेकंड में है, कुछ किलोमीटर पर आवर में। So let's bring everything to the same units. सबसे पहले आप जो स्पीड है ट्रेन का, you just bring it to from kilometer per hour to meters per second. What is the factor? The factor is 5 by 18, right? So you multiply by 5 by 18, 63 kilometers per hour, you convert it, you get the speed of the train. So speed is equal to distance by time. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे स्पीड पहली गुत्थी हमने समझा ली, स्पीड इज 17.5 मीटर्स पर सेकेंड, राइट? सेम यूनिट्स में लाने के लिए हैव टू एंश्योर कि सारे यूनिट्स या तो मीटर्स पर सेकेंड में हो, या तो मीटर्स पर सेकेंड पे हो, या फिर किलोमीटर पर आवर में हो, राइट? ईदर ऑफ द टू, क्योंकि दो चीजें थी, राइट, सेकेंड और मीटर्स में, तो इसको हमने मीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। स्पीड आ गया 17.5। गुड। सेकेंड स्टेप, अब let's calculate the total distance covered by the train in 20 seconds. As I told you, जो फॉर्मूला है, speed is equal to, speed is basically total distance by time, right? यानी कि जो भी उसने डिस्टेंस कवर किया है into total distance by time. So if I need to find the distance, total distance, that is coming out to be speed into time, right? Speed आ चुकी थी 17.5, time था 20 seconds, so that basically gives me, I just multiply it by, just look over here, 17.5 meter per second multiplied by 20 second, second से second कट गया, so that's basically 17.5 into ये zero गया, 175 into 2, that's 350 meters, right? So that is the total distance जो ट्रेन ने कवर किया। अब टोटल डिस्टेंस इस केस में कितना होगा? आई होप एवरीबॉडी रिमेंबर्स द कॉन्सेप्ट। द टोटल डिस्टेंस वाज, क्योंकि हमारा ट्रेन उस ब्रिज के साथ उस ब्रिज के लेंथ को भी ऐड करना होता है, तो बेसिकली लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज
is equal to the total distance. अब लेंथ ऑफ ट्रेन तो हमें दे रखा है 100 मीटर्स, तो TD माइनस 100 meters में करूंगा तो I'll get the length of the bridge or the platform in this case. So what I say total distance is equal to length of platform plus length of train. And the moment I want to get the length of platform, it's 350 minus 100, that is 250. और सही आंसर होता ऑप्शन सी या ऑप्शन थर्ड. Is this clear to everyone? क्या ये concept clear है सबको? We looked at all the different aspects of the concept which we learned few minutes back. And let me clear off the screen. Tell me, everyone, any doubts? 250 meters का concept समझ में आया सबको? It is fairly simple, right? Speed is equal to distance by time. And in this case, your distance is the length of train and the length of the bridge. Please tell me, everyone, is this clear? Right? Anybody, any doubts? पूरे सेशन में किसी को कोई डाउट? I hope that's clear to everyone because there are no messages. On that account, I thank you all for your time. This is what will be the model of our course. I just demonstrated you a small, visual of the way we will be covering the concepts. And as we move along, we'll look at all the theoretical concepts and the numerical concepts as well. Okay. So thank you for your time. Thank you, Daljit. Yep, that's good. That's clear. See you again on the next class.